measure of degree of urbanization, and first one which we discussed last time was the Lorentz curve, and that curve was basically used to check the concentration of urban activities in any area. Sorry, I had to mute for some reasons. Okay, so that was about Lorentz curve. I was telling you that we have already discussed Lorentz curve, and that was a method for measuring the degree of urbanization, how much urbanized an area is, and how much is the extent and the concentration of urban activity. Like ऐसा तो नहीं है कि किसी एरिया में like किसी भी कंट्री के अंदर urbanization सिर्फ एक पार्ट में हो रही हो या एक शहर में और बाकी पूरा कंट्री रूरल है. So that spread is studied by the Lorentz curve, जिसमें सेंटर की तरफ अगर कर्व हो, लाइक कर्व इज फ्लैट, दैट मीन्स कि वहाँ पे प्रॉपर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर जितना कर्व मुड़ता हुआ जाएगा, जितना कर्व बड़ा होगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे कंसंट्रेशन किसी एक या दो जगहों पर है, बाकी जगहों पर नहीं है. सो गिनी कोफिशिएंट इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट, लेकिन लॉरेंस कर्व में we used to like it's kind of a graph, jabki Gini coefficient is a value which is calculated by some statistical method, right? So, and how can we define it? In simple words, we can say Gini coefficient is the comparison between two urban data, और ये जनरली यूज़ किया जाता है विद इन अ कंट्री. लाइक लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कराची एंड पाकिस्तान, के कराची का अर्बन पैटर्न और पाकिस्तान का अर्बन पैटर्न, इन दोनों का क्या कंपैरिजन है. आइदर द कंट्री एंड कराची आर द सेम, या कराची की वैल्यू ज़्यादा है और पाकिस्तान की वैल्यू कम है, या पाकिस्तान की वैल्यू ज़्यादा है या कराची की वैल्यू कम है. सो दैट कंपैरिजन between two sets, two percentages of two places is the Gini coefficient, और इसकी वैल्यू रेंज करती है from 0 to 100. So अगर 0 की वैल्यू आती है मीन्स वैसे परफेक्ट 0 वैल्यू नहीं आती है और ना ही परफेक्ट 100 वैल्यू आती है. बट इफ द वैल्यू इज लाइक okay, some more people are in the waiting room, so we'll let them enter. Okay, so we do not have 0 value and 100 value, क्योंकि आइडियल सिचुएशन तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है. बट if the value is low or near to 0, that means that the two places, the two set of data are identical, similar pattern है urbanization का, और value अगर 100 होगी, that means कि there is disparity, there is difference, and the two data are as different as possible. जितना मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा difference है. So this is Gini coefficient in simple words, and let me write down. How can we say that? Yeah, it is statistical measure of statistical in terms of numbers, जबकि लॉरेंस कर्व जो था वो ग्राफ की फॉर्म में था. Okay, statistical measure of degree of similarity.
degree of similarity between two sets of, excuse me, percentage data. So this is Gini coefficient, the measure of the degree of similarity between two sets of percentage data. And of course, the data is of two urban units, or we can say two urban areas, two urban cities, or two countries, any country or a city, country or a province, that depends. बस दो डेटा होना चाहिए परसेंटेज की फॉर्म में कि कितने परसेंट अर्बनाइजेशन है. लाइक let me repeat the example of Karachi and Pakistan. Like urbanization in Karachi, the percentage of Karachi, it can be like 70%, and then for Pakistan, it's, let's say for example it's 40% or 50%. Then we will compare these two data using this measure. And of course सिर्फ simple comparison percentage का नहीं है, बल्कि we use a certain formula for calculating the Gini coefficient. So let's write down the formula for Gini coefficient. Formula for calculating Gini coefficient, it's G stands for Gini coefficient, and it's half of the summation so let's change the values here. It's G equals half of the summation of x1 and y1. So we can say that, so this is actually the formula. Let me delete this one. All right, so this is Gini coefficient formula. Ignore these boxes. We do not need these. Okay, so G equals to half summation of the difference between place 1, x1, that is this data 1, and the data 2. So we can say this x1 is Karachi and y1 is Pakistan. So we will write the data for these two places, and the data is not as 1%. Let me take that to the next slide. Okay. Okay, so control. Right. So this is Gini coefficient. And we say, let's suppose we have a set of data where we are taking two places like okay. So
The data for Gini coefficient would be something like this. The industry followed by region A. Here we can say it's Karachi. Okay. Region A is Karachi. Then we have region B. It can be Hyderabad. Then we have Pakistan. Let's say cotton industry, oil industry, sugar, sugar industry. Industry in two regions. National region A will be X1, and the national value will be called as Y1, and region X1 and Y1. Um, if, please let me know if I am audible to everyone, just to check. Yes, can you guys hear me? There must be some network error on some students' side. Okay, thank you. Okay, so this will be the set of data, and the data for any coefficient look something like this, and these x values like x1, x2, these can be more. Like if we are comparing two cities or three cities, four cities, so ये column x1 का x2 x3 x4 x5 it can increase क्योंकि ये हम एक city और उसका नेशनल वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं कि दोनों कितना डिविएट करते हैं या दोनों का पैटर्न सिमिलर है. So then these values are plotted in this formula g equals to half summation difference of x and y. So इसमें अगर x की वैल्यू लाइक यू से फार्मा इंडस्ट्री के अंदर रीजन ए में 40% है और नेशनली y में 10% है, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, बट हम उस माइनस को उस टाइम पे कंसिडर नहीं करते क्योंकि हमें ओवरऑल समेशन चाहिए होता है, सो दैट माइनस साइन इज इग्नोर्ड. जो भी वैल्यू आती है उनका सम लिया जाता है. सो वी कैन से the box is gone. All right. So if we have to find out for region A,
we are finding the Gini coefficient for region A. तो इसके लिए like G equals half excuse me, and summation. Okay, consider that E as the summation sign, because finding it there, it's taking a bit of time. Okay, now we will take the big bracket and let's increase the font size. Okay, एक बिग ब्रैकेट लिया और उसके बाद हम हर वैल्यू की समेशन लेंगे. लाइक फॉर कॉटन इंडस्ट्री इट्स 20 माइनस 25. यू सी X1 में 20 है और नेशनल में 25 है, तो हमें हर वैल्यू के साथ हियर इफ़ यू सी Y1 के साथ दूसरी की वैल्यू लेनी है. सो 20 माइनस 25, इसके बाद क्योंकि समेशन है तो इट विल बी प्लस फॉलोड बाय अनदर लाइक अब देखेंगे हम फार्मा इंडस्ट्री. सो इट्स 40 माइनस 10. फिर तीसरी इंडस्ट्री हमारे पास आ जाएगी विच इज़ द शुगर इंडस्ट्री. 10 minus 25. So whatever the sum will be, that will be calculated. Like we can say it's 20 minus 25 is it's this is summation sign, this is not E, just to remind you. Okay, 20 minus 25 is 5 plus 40 minus 10 is 30 plus 10 minus 25, again difference of 10 and 25 is 5. तो यहाँ पे हम माइनस का साइन इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमें समेशन चाहिए सारी वैल्यूज़ का. So 35 and 5 it's 40, so it will be 40, so it's half 40, so half of 40 is 20. So ये है हमारा Gini coefficient value for region A, which is 20, and 20 means that the pattern is slightly identical. क्योंकि जब वैल्यू गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू रेंज होती है फ्रॉम 0 to 100, और अगर फर्स्ट हाफ में आता है यानी 50 से कम वैल्यू या 0 के आसपास, दैट मीन्स कि दोनों का पैटर्न मोर और लेस सेम है. अर्बनाइजेशन का लेवल सेम है दोनों एरियाज में, नेशनल भी और उस पर्टिकुलर रीजन में. देन अगर वो 80, 90 या 70 की वैल्यू आती है, दैट मीन्स कि दोनों में डिस्पैरिटी है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है अर्बन पैटर्न का, एक का ज़्यादा है और एक का बहुत कम है. So that's Gini coefficient, and that's how you can calculate for region B as well. You can take the screenshot and just 10 and 25 is not equals to 15. You have written 10 minus 25 is minus 15. Don't tell me. Is it 15? Yeah, okay. Thank you. Then 30 and it should be 50. Right, okay. Thank you, Mariam, for the correction. Here, so 30 and 15, 45 plus 5 is 50. Half of 50 will be 25. So this is actually the Gini coefficient. That was an error that I took the difference of 10 and 25 as 5, but it's 15. All right. So this is 25. And again, 20 या 20 हो या 25 हो, this shows that this value is near 0. So we would consider the two places as slightly identical, the national one and region A1. अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और रीजन बी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, just as your practice. So this is Gini coefficient. Now, if you remember, we did some other measures of urbanization. So now we will discuss those. All right. So that
Measure of degree of urbanization. Okay, so the next measure is the urban density index. So that's kind of simple. The word density is there, and of course density जो simple words में है वो mass per unit volume है. So यहाँ पर भी mass per unit volume देखेंगे. Urban density है तो mass means the population of urban area divided by the area, the physical area. So that gives the urban density population, and yeah, urban population per unit area of land. So this is urban density index, and the formula is simple. It's UD equals PC over AI. So all right. So write these as subscript, the small letters. These will be subscripts, this C as well. Okay. So that's the urban density index, and this is quite simple. PC is the urban population, AI is the total area of the region, and UD, of course, that is the density of urban, like it's urban density. So the like it's a simple ratio. If the density is high, it means it shows that there is a very high degree of urbanization, and if the density is low or mediocre, then we can say yeah, the degree of urbanization is middle to low. So iska direct relation hai urban degree of urbanization ka और urban density index की value का. So this one is quite simple, but the two measures which are widely used और जिसको काफ़ी ज़्यादा accurate माना जाता है, those two are the Lorentz curve and the Gini coefficient. Okay, now the next one. The next measure of degree of urbanization is the percentage distribution model. Percentage distribution model. Okay, so this distribution model is the proportion of total population living in the urban area. So it tells the proportion of total population living in urban areas. So that's again a simple measure. टोटल पॉपुलेशन, टोटल आबादी का कितना हिस्सा अर्बन एरियाज में या शहरी इलाकों में रहता है, दैट इज द urban, percentage distribution model, and this is taken by dividing the city population with the total population, and of course with multiplied by 100. So let's take that.
city population divided by the total population. It is urban percentage distribution model. Okay, so this is another simple measure. Now the next one is scale of urbanization method. Scale of urbanization method. So this tells the percentage of urban population of one area compared to the total urban population. पिछला वाला जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था वो अर्बन पॉपुलेशन किसी एक शहर की लाइक कराची की पॉपुलेशन को पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन से कंपेयर किया था, बट स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन मेथड के अंदर वी टेक द पॉपुलेशन ऑफ कराची and then we take the population of all the urban centers in Pakistan. So population of urban area and the population of total urban areas. So the proportion of urban population in a city compared to the total urban population. So this is the scale of urbanization method. Now the next one. Next measure is scale of population concentration method. Scale of population concentration. मैम लास्ट वाला दोबारा शो करते हैं, वो नजर नहीं आया, फौरन चली गई थी स्लाइड. So this is calculated like this can be defined as the position of an urban area in total urban population. Like we can say, let's take the population of Peshawar in Pakistan. That's an urban area. And we take the population of Peshawar, and then we will take the population of all the urban centers which have higher population than Peshawar. So you want to see the last one again. So here you can see, this is scale of urbanization method. Okay, so you can see the last, you are requesting to show the last slide. So here it is, scale of urbanization method. इसमें city population और total city population को use किया जाता है. And the ones which we are discussing now, like अभी और उसके बाद वाली जो slide है, these are kind of similar, बस इनमें हल्का सा difference है. इसमें हमने total population ली थी और like we actually do the scaling of urban population. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देन उससे कम. तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी स्केल ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन मेथड. लाइक वी आर टेकिंग पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी
and then we take the population of the cities which are higher, जिनकी population उससे ज़्यादा हो. तो I have taken the example of Peshawar in Pakistan के पेशावर की population लें, तो इस स्केल के अंदर या इस मेजर के अंदर, इस मेथड के अंदर पेशावर के साथ साथ we will take all those cities which have more population than पेशावर, like उसमें कराची की population आ जाएगी, लाहौर की आ जाएगी, फैसलाबाद की. So that's how this scale is done. And again, इसमें भी numbering according to that. So we can say the ranking method. It's kind of a ranking method for urban concentration. For scale of urbanization method, there is a question के इसका कोई formula है या नहीं. इसका formula, sometimes the formula is used, but here I'm not going after the formula for that. So now the ranking method for urban concentration. This also has a formula, but let's not take that formula. Yeah, let's move forward. मेन आपको गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी तो काफ़ी सिंपल हैं. इट्स जस्ट लाइक one value and then you have to those one value from each place and then simply इसको या तो multiply करेंगे या आप divide करेंगे. इसके अलावा इसमें कोई as such complexity नहीं है. That's why I'm not going after those. Okay, this is scale of urbanization, scale of population concentration method. Now the next one is median value method. Okay, so median value method. Median can be defined as the median value, the value which lies exactly in the middle of a set of value which is arranged. एक arranged set of values या arranged data में जो middle most value होती है, बिल्कुल central value, that is the median value. So for this method, okay, can you guys hear me now? Maybe it's your internet issue that the screen appears to you a bit late. And the internet issue is something which, like, we are most of the time helpless. But let's hope now it's clear. So using the median value method, this is again the ranking of the cities according to the population. And we first arrange the values in order. Then we find out the median value and then we rank that these are the cities which lie in the higher population category, and these are the these are the cities which lie in the lower population category. So ranking of the cities according to increasing size of
population and finding the middle value to divide the data into two equal halves. Okay, so दिस इज इट, इट्स सिंपल। आपने मीडियम वैल्यू निकाली और उसके बाद डेटा को दो हाफ में डिवाइड किया, the bigger half and the smaller half, or the half with the higher values, the half with the lower values. Okay, how many are left now? And we need to see the time as well. Okay, we have some. So this next one is average spacing method. So this average spacing method is used to study or used to compare the distances, the space between the urban centers. के कितने अर्बन सेंटर्स हैं किसी भी कंट्री के अंदर. लेट्स मेक इट मोर सिंपल, लाइक टेक अ कंट्री and take out all the cities or urban centers there, and then find out the average distance between those cities. So that is the degree of that is the average spacing method. जितनी स्पेस कम होगी उतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी, और जितनी स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो वो डिस्पर्स, दोबारा से वही टर्म आ गई कंसंट्रेशन की, कि एक जगह पे कंसंट्रेशन है या वो इवनली स्प्रेड आउट है. एक्सक्यूज मी. सो और इसमें एक अजम्पशन होती है कि वी आर अज्यूमिंग द प्लेस टू बी इन सर्कुलर शेप. So the measure of urban areas and their distances is the average spacing method. The shape of the urban center is assumed to be circular. वैसे तो perfectly circular जगह नहीं होती, लेकिन कुछ formula या measures के अंदर the things are assumed for better calculation. So that's the average spacing method के average on average क्या distance है different urban centers के बीच. So we can say like अगर हम जापान की example लें तो वहाँ पर average spacing method से if we see तो the space is very less. Comparatively अगर हम किसी अफ्रीकन कंट्री को लेंगे तो वहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है कि एक अर्बन सेंटर मुल्क के एक कोने में और दूसरा दूसरे कोने में. इसके अलावा देर आर सम कंट्रीज के जहाँ आपको ज़्यादा अर्बन सेंटर्स मिलेंगे भी नहीं. तो दैट इज़ अर्बन स्पेसिंग मेथड. ओके, सो दिस इज एवरेज स्पेसिंग मेथड, और इसमें
Radius, yeah, distance between two urban centers play vital role in telling this measure. जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही वैल्यू कम आएगी एंड जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी इस इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी. Okay, then next one is primary index of urbanization. Excuse me. Okay, so the primary index of urbanization, excuse me for going on mute. My throat, this coughing thing is just having problem. Anyway, so primary index of urbanization, this index of urbanization compares the highest populated city with the second, third and fourth highest population. So एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइमेट सिटी का. प्राइमेट सिटी उन शहरों को कहते हैं जो काफ़ी विच हैव rich cultural history or that those primate cities have high population or overall excuse me, एक primate city पूरे कंट्री के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है. लाइक हम अगर पाकिस्तान में देखें तो कराची कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमेट सिटी. इसके अलावा अगर हम यूएसए में देखें तो न्यूयॉर्क एक प्राइमेट सिटी है. फ्रांस के अंदर पेरिस एक प्राइमेट सिटी है. इंग्लैंड के अंदर लंदन एक प्राइमेट सिटी है विच इज़ काइंड ऑफ द लार्जेस्ट वन एंड विच हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री. और पूरा एक पॉपुलेशन एवोल्यूशन का एक प्रोसेस उस शहर से जाता है. सो वहाँ से प्राइमेट का कॉन्सेप्ट लेके दे हैव टेकन आउट दिस प्राइमरी इंडेक्स ऑफ अर्बनाइजेशन को डिफाइन किया गया. एंड थिंक दिस वाज डन बाय जेफरसन, अ पर्सन नेम्ड एज जेफरसन. सो दे हैव टेकन द population of largest city, comparison of the largest or the प्राइमेट सिटी. बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर दफ़ा प्राइमेट सिटी ही लार्जेस्ट हो. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो प्राइमेट सिटी है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा नहीं होती बल्कि कंपेयर टू दैट किसी दूसरे सिटी की पॉपुलेशन बढ़ जाती है. बट in most of the cases the largest is the primate. So comparison of the largest primate city with other with the top 3 cities in terms of population. So that comparison is the primary index of urbanization, or इसमें P1, the population of the first city, is divided by the sum of the other 3 cities. तो इस sum के साथ ये value जितनी ज़्यादा आती है, so that means कि it has more concentration in the primate city. Higher value, more concentration; lower value, less concentration of urban population in the largest city or the primate city. So I think for this lecture, let's keep it up till here.